Hello and welcome to Bollywood Wala. I am Sunup. I'm seated alongside Ashish Shukla ji, a director I really admire for his work in web series like Andeki and film like Bahut Hua Samman. He's currently directing a series called Candy for Wood Select in this lovely hill station called Nainital. बहुत ठंड पड़ रही है, धुआं निकल रहा है मुंह से हर जगह से, लेकिन फिर भी शिद्दत से बहुत सिंसियरली आशीष शुक्ला साहब डायरेक्ट कर रहे हैं उनके पूरे यूनिट को. आइए उनसे पूछते हैं कैंडी के बारे में, क्या थॉट है कैंडी का और कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं रोनित रॉय और ऋचा चड्डा को. आशीष जी, हाँ जी बताइए. वेलकम टू बॉलीवुड वाला. थैंक ह्यूज एडमायरर ऑफ योर Pleasure. डायरेक्टोरियल स्किल्स. प्लेजर. कैंडी के बारे में कुछ बताइए. ये सब्जेक्ट कैसे आया मन में, कैसे आपने पूरा तैयार किया सब्जेक्ट को, और भी बहुत बातें करेंगे, बट लेट्स बिगिन विद दिस. हाँ, अभी तो मतलब हमारी फिल्मिंग ही चल रही है. कैंडी लिखा है देबोजीत और अग्रिम जोशी ने, और कहानी बहुत सारे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हुई है. और कहाँ जहाँ पे एक छोटे टाउन की बात करना चाहते हैं. इट्स ऑल्सो अ जॉनरा कॉल्ड एज अ बॉय इज फाउंड और अ बॉडी इज फाउंड. ठीक है. एंड द स्टोरी ऑफ होल टाउन अराउंड इट. So yeah, it's also story about grief. It's story about parenting. It's story about a small town where everyone knows each other, and the culprit can be anyone from the town. ओके. So yeah, काफ़ी है mystery है, but there is also a streak of horror in the show. ओके. Yeah. कास्टिंग बहुत बढ़िया किया है. रोनित रॉय, ऋचा चड्डा और मनु ऋषि चड्डा साहब भी है. तो कास्टिंग पर कैसे आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि आपका कास्टिंग आपके प्रीवियस फिल्म या वेब सीरीज में भी उमदा रहा है. हाँ. तो इस बार रोनित, ऋचा, मनु ऋषि साहब का जो नाम है, कैसे आपके मन में आया? या मैं चाहता हूँ कि जो भी कास्ट यूज़ करूँ वो टाइप कास्ट ना हो पहले से. मतलब किसी कॉमेडियन को कॉमेडी का काम दे दूँ, या फिर जो पहले कर चुका है उसको वही वाले रोल में लेके आ जाऊँ. सो वी ट्राई कि उस जोन में कास्ट ना करें. तो आई सिंस लॉन्ग मनु इज़ अ ओल्ड फ्रेंड एंड आई वांटेड हिम टू प्ले अ विलन समवेयर. ओके. ठीक है. सो ही हैज़ बीन डूइंग लॉट ऑफ कॉमेडीज़ बिफोर, एंड मैं बहुत हमेशा से चाहता हूँ कि, और मैं मानता भी हूँ कि काफ़ी सारे जो एक्टर हैं जो कॉमेडीज़ करते हैं, दे आर वेरी गुड इन, दे कैन बी अ वेरी गुड विलन्स. ओके. सो वेदर यू सी अनदेखी और बहुत हुआ सम्मान, ठीक है, वेर आई हैव यूज्ड राम कपूर इन अ पर्टिकुलर रोल, यू नो, और राघव जुयाल. सो मनु केम फ्रॉम देयर. Richa, obviously, I wanted to see Richa in a role where she's playing a cop, you know. In fact, I wanted to direct a cop, a lady cop who's corrupt. ठीक है, morally corrupt. So, and Richa is ideal for that kind of ideal, मतलब not otherwise, but yes, Okay. as per her abilities of as an actor, Okay. she can do justice to that. And Ronit? Ronit is like legend of whatever he does. Like I have been a big fan of Ronit since Udan or say Ugly. So for me it was a fan moment when I started working with Ronit, and I hope we will do some magic together. Yes. Yes. How do you get these great performances and very brilliant and engaging performances from these actors? So yeah, I mostly what I do is, because I have been doing a lot of small budget projects even in my earlier career. So I always depended on performances, because I think a performance can make a show very engaging. Okay. The engagement comes from there. You cannot depend on visuals and other things, you know, or the paraphernalia if the performances and stories are not working. So number one, obviously story, your script, and then the performance plays a big role. And I always try to treat every scene like a short film. Okay. You know, the scene has to work. If the scene is not working, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि लोग सोचते हैं यार ये वाला सीन तो निकल जाएगा, ठीक है, इसके आगे वाले सीन में बहुत ड्रामा है और वो काफ़ी यू नो हमने सजा के किया हुआ है, बट वो कभी नहीं होता है. एवरी सीन यू नीड टू ट्रीट इट एज अ माइंड ब्लोइंग सीन, और यू नो it has to work like a short film, you know, then it will work in the narrative. Right. So for that I try to do as much reading or mock shoot or workshops Okay. possible with the actors. That's a great thought. Yeah. You know,
The kind of success that you have tasted with Andeki and of course Bahut Hua Samman, pressure rising on your shoulders to deliver yet another blockbuster. See, the thing is, it's a trap. If I'll get stuck in that trap, then there will be a lot of problems. But do you actively think about it? See, I'm being told about that, the thing that you are talking about. But I want to do stuff which excite me. Okay. You know, I don't know what I'll be doing next. You know, if someone comes with some story or I get excited about something, then I do that, rather than thinking that where my career will go with this project. Right. So obviously, I want to do better and bigger projects, but there are many projects which I am doing even now, which have been chosen as per their merits, rather than कि ये इतने बड़े प्रोडक्शन का या इतने बड़े चैनल का है, but though the project is not good on paper, but I'm doing it because I want to do a good project. It doesn't work that way. Okay. Yeah. All right. A lot of people waiting for Andeki too. Any update that you could share? Yeah, it's happening. Yes, I think post this I'll be doing that as well. So by saying that, I'll be in mountains for 6 months of this year. He's a mountain man now. Literally. Yeah, I'm a mountain man right now. So yeah, so I'm since last 3 months I'm doing this one. Then as soon as this will get over, I'll be going for Andeki season 2, and there are a lot of surprises because we had a strong cliffhanger in season 1. Absolutely. So there will be a lot of stuff coming up, from revenges to some more characters coming up. New characters added? Maybe, yes. Oh, maybe, yes. Keeping his cards close to his chest. But Ashish ji, thank you very much and all the very best for Candy. Thank you so much. Thank you. Pleasure. Thank you. Thank you.